Assalamu alaikum. So in this video, we are going to cover the critical framework that is very important. So let's see first of all what is feminism. Feminism is a collection of movements and ideologies aimed at defining, establishing, and defending equal political, economic, cultural, and social rights for women. It means when we talk about first wave of feminism, second wave of feminism, or third wave of feminism, in which women stress upon the gaining of political, social, and cultural rights, and they gaining the freedom from exploitation, from subjugation position, all cater in the field of feminism. All movements that we are going to discuss in further video all cater or incorporated in the area of feminism. Keep in mind. So let's start with the liberal feminism. Liberal feminism is a feminism that seeks equality between men and women through political and legal reform without altering the structure of society. The things that you must keep in mind about the liberal feminism is it is gender-centric approach. It means not women but gender equality is ensured in liberal feminism. Second one is it focuses on public sphere only, and the third one is that liberal feminism is mother of feminism. The fourth one, that is most important thing about liberal feminism, is that radical feminism is child of liberal feminism. That is most important. We are going to discuss radical feminism after liberal feminism. So let's see after this what is radical feminism is actually. And the fifth but the most important thing about liberal feminism is that it takes a gender neutral or gender blind approach. Like it claims that men and women are equal, so they should be treated equally. And it claims that there must be some reforms in the oppressive system. Oppressive system of society means patriarchal system. So let's see what are important contributors in the field of liberal feminism and who are the most important personalities or feminists in the liberal feminism. So first one is Mary Wollstonecraft. Mary Wollstonecraft is very important as she is called the mother of feminists. So she wrote a book, a vindication of the rights of women, in 1792, in which she claims that there should be equality between men and women that actually live in a society. So after Mary Wollstonecraft we will find John Stuart Mill. इन्होंने बात की थी कि कोई भी सोसाइटी या किसी भी सोसाइटी में अगर मेल और फीमेल यानी मैन और वेमेन को इक्वल अपॉर्चुनिटीज नहीं दी जा रही तो कभी भी उनकी जो नेचुरल पोटेंशियल है उसका पता नहीं चल सकता. He claims that no one can assess natural difference between men and women and thus allowing both to develop and use their faculties or proper natural powers freely. मतलब जो भी उनको नेचुरल ने दिया नेचुरल पावर्स इनबॉर्न गिफ्टेड हुई हैं, जब तक कि उनको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दी जा रही, वो उनको यूज़ नहीं कर रहे अच्छी तरह से फुली प्रॉपरली और फ्रीली, तब तक कोई उनकी जो पोटेंशियल है नेचुरल पोटेंशियल उसको असेस नहीं किया जा सकता. लाइक नहीं कहा जा सकता कि मेल जो है या मेन जो है वो सुपीरियर है फ्रॉम वुमेन या वुमेन जो है इंफीरियर है फ्रॉम मैन. और उसके बाद जो उन्होंने बहुत इम्पोर्टेंट बात की थी दैट इज़ कि वुमेन को प्रॉपर्टी राइट्स मिलने चाहिए एंड उसको लाइक डिफरेंट जो है इक्वल राइट्स मिलने चाहिए जस्ट बिकॉज क्योंकि वो भी बिल्कुल उसी तरह इक्वल है एज मेन इज़ इम्पॉर्टेंट. सो उनकी इम्पोर्टेंस एक है दे आर इक्वली entitled for all the opportunities. So the third one is that Betty Friedan. She is very important as she is the writer of feminine mystery or
उसमें जो इन्होंने बहुत प्यारी बात की थी, दैट इज़ प्रॉब्लम दैट हैज़ नो नेम। इन्होंने इस सेंस में ये बात की थी कि जो वुमेन हैं जो घर में रह रही हैं वो बॉर्डम होती हैं, वो एम्प्टीनेस होती हैं, जस्ट बिकॉज उन्होंने जो जिस चीज़ से जस्टिफाई किया था वो इस एग्जाम्पल से कि जब एक वुमेन कॉलेज से या यूनिवर्सिटी से फ्री होती है, शी हैज़ नो एम, नो विजन, नो गोल, जस्ट बिकॉज कि उसकी जो माइंड सेटिंग है वो सिर्फ इतनी कर दी जाती है दैट शी जस्ट हैव टू मैरी, and after marrying she has to take care of her husband, of her home, and she has to give birth to child and look after them. So just उनकी ज़िंदगी का जो कहने के गोल है वो यहीं तक जो है यहीं तक घूमता रहता है और बस इसके आगे ख़त्म। इसके बाद जो इन्होंने बहुत इम्पोर्टेंट काम किया विद द हेल्प ऑफ अदर फेमिनिस्ट और एक्टिविस्ट एट दैट टाइम, वो ये था, शी फाउंडेड नाउ एक्चुअली नेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर वुमेन। और ये ऑर्गेनाइजेशन जो है फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो टारगेट करती थी वो थी हेट्रोसेक्सुअल, वो वाइट वुमेन थी, वो मिडिल एजेस की, और वो लेस्बियंस थे, ठीक है। सो नॉट लेस्बियन, यंग गर्ल्स, वो यंग गर्ल्स थे। लेकिन जब क्रिटिसिज्म हुआ था इस पे कि भाई क्यों ओनली हेट्रोसेक्सुअल और वाइट वुमेन आर केटर इन लिबरल फेमिनिज्म, फिर इन्होंने लेस्बियन और बाकी जो सब थे उनको जो है वो केटर करना शुरू कर दिया था। और जो ना ऑर्गेनाइजेशन थी, इन्होंने जो 6 हॉट इश्यूज थे एट द टाइम उनको एड्रेस किया था, लाइक अबॉर्शन राइट्स थे उस वक़्त जो उनको एड्रेस किया, लाइक वायलेंस अगेंस्ट वुमेन था, कॉन्स्टिट्यूशनल इक्वालिटी था, प्रमोटिंग डाइवर्सिटी एंडिंग रेसिज्म था, लेस्बियन राइट्स थे या इकोनॉमिक राइट्स थे, उन सबको इन्होंने एड्रेस किया। सो एक और बहुत जो इम्पोर्टेंट काम किया वो है बेटी फेडरन, दैट वाज टू प्रोवाइडिंग पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म to the women of that time. So it's all about liberal feminism. इसके बाद है radical feminism, that is also very important. So just consult for the other video, that is very important. Hopefully आपको ये ज़रूर समझ में आ गई होगी।